हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब सईद वेलकमिंग यू ऑल टू साकिब सईद ट्यूटोरियल्स। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर में से फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में से डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनकी डेरिवेशन हम आपको सिखाएंगे कि कैसे करते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे डेराइव करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन कौन सी है इक्वेशन ऑफ मोशन, देन बाद में हम डेरिवेशन पे जाएंगे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, पहला जो है, फर्स्ट वन इज v इज इक्वल u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड वन इज s इज इक्वल u t प्लस 1/2 ऑफ a t स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम देखेंगे कि हम ये कैसे इनकी डेरिवेशन हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम इन चीजों को डेराइव करते हैं। जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो ये इक्वेशन आती कहां से है, कैसे हम इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द rate of change of velocity. What does rate mean? Rate means change of velocity with respect to time. So we can write this as equation first का मैं दिखा रहा हूं आपको। We can write acceleration is equal rate of change of velocity. That means v minus u. It is the change of velocity divided by t. That means it's a change in velocity with respect to time. If we will cross multiply this, what we will get? A into t. It will be a t is equal to v minus u. A t is equal to v minus u. Or we can write it as v minus u is equal to at. V minus u is equal to at. Or this can be further written as that v is equal to at. This negative u, when it will get transferred to this side, this will be the positive. This will get positive. Then v is equal to at plus u, or we can write it as v is equal to u plus at. v is equal to u plus at. This is the required first equation of motion. So कहां से हमने पहली इक्वेशन फाइंड की? हमने एक्सेलरेशन से निकाली। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। दैट मींस a is equal to v minus u divided by t, and then at is equal to v minus u. On cross multiplying this, we get v is equal to u plus at. This is the required first equation of motion. अब यहां पे सेकंड इक्वेशन है। हाउ कैन वी डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? दैट इज s is equal to ut plus 1/2 of at square. There is another concept that is known as the average velocity. What is average velocity? Average velocity is actually the arithmetic mean of initial velocity and final velocity. Arithmetic mean of initial and final velocity. Second equation. We can define second equation. Second equation हम कैसे निकालते हैं? By average velocity. Average velocity can be defined as average velocity is equal arithmetic mean of initial and final velocity. That means it is u plus v divided by 2. Arithmetic mean of initial and final velocity. U plus v divided by 2. U is the initial velocity and v is the final velocity, and average velocity is their arithmetic mean. So एक और चीज पता है हमें, that speed is equal distance divided by time. Speed is equal to distance divided by time. Or we can say that distance is equal speed into time. Distance is equal to speed into time, and we denote this distance as s. Distance is denoted by s. As you might knowing this, that distance is denoted by s, and s is equal to this speed
and here it is velocity, and you might be knowing the difference between velocity and speed. It is something like sum. So we can write, for speed we can write u plus v divided by 2. This is velocity and this is speed. U plus v divided by 2 into time t. Further, we can state it like this. S is equal. Listen, यहां से ये तो एक चीज है, u तो u ही रहेगा, प्लस ये जो v है, v का वैल्यू हमें पता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सो इस v के बदले हम ये वैल्यू डालेंगे इसमें, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 into this t. Now again this will be like this. S is equal u plus u, it will be 2u plus at divided by 2. 2u plus at divided by 2 into t. Now further, S is equal this 2u into this t. It is 2ut plus at square divided by 2. It's 2u into this t, it is 2ut, at into t, it is at square, and divided by this 2. This can be written as S is equal 2ut divided by 2 plus at square divided by 2. This 2 and 2 will cancel out, and we will get S is equal to ut plus 1/2 of at square. This is divided by 2, and we can write it as 1 by 2, and 1 by 2 into at square, that is 1/2 of at square. This is the required second equation of motion. Now we will move to third one. How can we prove the third one? Third equation of motion can be proved by like this. Now third one. If we will do squaring to this very equation on both sides, squaring equation first. This is the equation first. Squaring equation first on both sides. What we will get? We will get v square is equal to u plus at whole square. V square is equal to u plus at whole square. This can be written as v square is equal, यहां पे आप देख सकते हैं u plus at square. It is in the form of a plus b whole square. And a plus b whole square किसके बराबर होता है? a square plus 2ab plus b square. So here a square is u square plus 2ab plus b square. B square it is at square. Now v square is equal to u square plus 2uat plus a square t square. Okay. Now अब हम क्या करते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर. देखो यहां पे एक जगह हमें 2 है, दूसरे वाली टर्म में 2 नहीं है. यहां पे हम कॉमन निकालने के लिए जो 2 इसको एक से हम दूसरे वाले जो हम 2 डालते हैं, हम ऐसे करेंगे 2uat प्लस 2 डिवाइड बाय 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर. क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 2 मैंने मल्टीप्लाई भी 2 किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 and 2 विल कैंसल आउट. तो ये जो है इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड वी कैन स्टेट इट लाइक दिस, v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस यहां से 2a कॉमन निकालेंगे. 2a जब कॉमन निकला यहां क्या बचेगा? 2a कॉमन निकला, 2a यहां क्या बचा? ut प्लस यहां से क्या निकला कॉमन? 2a यहां पे क्या बचा? 1/2 ऑफ a तो कॉमन निकला एक, दूसरा a वहीं पे है और बचा 2at स्क्वायर. तो यहां पे क्या बचा? ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर. सो
it will be like this: v square is equal u square plus 2a, and we know that ut plus 1 half of at square, ut plus 1 half of at square, ये किसके बराबर होता है? s के बराबर. So we can write it as v square is equal u square plus 2a, and इसके बदले हम s लिखेंगे क्योंकि ये किसके बराबर होता है? s के बराबर. This is the third equation of motion. This is the third equation of motion. Now हमने क्या, थोड़ा सा हम इस पर फिर से देख लेते हैं. हमें करना क्या था? हमारे पास तीन इक्वेशंस थी. पहला v is equal to u plus at, second s is equal to ut plus 1 half of at square, third v square is equal to u square plus 2as. हमने इनकी डेरिवेशन देखी कि कैसे हम इनको डेराइव करते हैं. पहला एक्सेलरेशन से, पहली इक्वेशन एक्सेलरेशन से निकालते हैं. एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो v minus u, final minus initial velocity divided by time, and we got v is equal to u plus at. Second equation कहां से निकाली हमने? From average velocity. What is average velocity? It is the arithmetic mean of initial and final velocity. So u is the initial, v is the final, and this is its arithmetic mean. V plus u plus v divided by 2, and the speed is equal to distance divided by time. Then we put it the values, and we got s is equal to ut plus 1 half of at square. And third one कहां से निकाली हमने जो पहली इक्वेशन है उसी की हमने स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग on both sides. So v square is equal to u plus at square, and u plus at square, it is in the form of a plus b whole square, and a plus b whole square किसके बराबर होता है? A square plus 2ab plus b square. And we carried this calculation, and we got v square is equal to u square plus 2as. Hope that you all will enjoy it, and inshallah you will get better benefit from this. Thank you.